simple, which is why it takes a long time for trading ranges to subside. हम बहुत पहले डायग्नोज कर लेते हैं कि ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, बट फिर it really makes us cry and lose our mind before it actually starts to make a move. Anyway, now अगर ये true है कि buyers और sellers हमेशा मैच होंगे और ये buying and selling forces का play जो है ये ऐसे ही चलेगा, तो in a sense the market can never be overbought and it can never be oversold, because the whole purpose of the market is to match the buyers and sellers. वहाँ पे कोई buyers हैं तभी तो price वहाँ पे पहुँचा है, right? So just to say that the Nifty has rallied 500 points or whatever and saying that it's overbought, Bank Nifty rallies 2000 points and saying that it's overbought, is not right. Market can never be overbought. अगर overbought होता तो price नीचे आ रहा होता already. उसमें it cannot it cannot have these type of inefficiencies in that instant. Things keep changing all the time, but within that instant कोई inefficiency नहीं होती है. वहाँ पे you can only say market is overbought in a hindsight. Hindsight में तो सब कुछ ही आसान होता है. Hindsight में तो it's the easiest. Any chart is very easy to trade in hindsight. I can show you it. It is easy to trade through indicators. It is easy to trade through patterns. Anything, literally anything, right? Real time में सब कुछ बहुत difficult होता है. And because we are betting on the future, we don't know what's going to happen. No one knows what's going to happen. Anyway, now the chart is just a representation of where the prices have moved in the past. That's it. Saying that वहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है और उसका टारगेट ये है and इसलिए मार्केट यहाँ तक चले जाएगा, all of that is wrong. It's a trading tool. It allows us to set stops, protect profits, take target exits, etc. Many other things. But one thing it cannot do is tell us where the market is going to go. Nothing can do that. This is very important to understand. We look at the chart and we say कि market यहाँ चले जाएगा. That's wrong. It's not right. It's not going to happen. Even if it happens, it's just a probability game. वो by chance हो गया. इसलिए नहीं हुआ कि chart pattern का target वहाँ था, right? Just buying and selling force meet हुए, वो वहाँ चला गया, कभी overshoot कर गया, कभी underachieve कर गया. But it's not the pattern that has created that creates a forecast basically. Or the last leg was let's say $500, तो अगला leg होगा वो भी 500 रुपए का होगा. There are a lot of things which in technical analysis which gives us these I would say shoddy concepts, but they're not real. They only exist in books. They don't exist in the real market. Okay, that's my view. Now we're just trying to go as fast as possible because I want to get to the meat of the presentation. These are just introductory concepts. On a chart, कोई भी chart अगर हम खोलें, if we'll see some large bars, really large bars, respective to the other bars that we see on the chart, and we will see some very narrow range bars, right? Mostly we'll see narrow range bars and कुछ उनमें large bars बन रहे होंगे, mostly, right? Now it's very easy to see कि past में जो हुआ है, जो हो चुका है, वो तो chart पे अब change नहीं हो सकता है, right? Any bar, let's say if you're looking at a 15-minute chart, once a 15-minute interval has passed, now that whatever is printed on the chart cannot be changed, right? This is called market structure, etched in stone. It cannot be changed. Okay? Whatever happens from now on will not change what happened in the previous bar. We are not as much interested in market structure as we are interested in price action. Price action is कि वो market structure create कैसे हो रहा है, right? Is the price being auctioned from one end to the other end continuously, या फिर वो एक बस आराम से धीरे धीरे चल रहा है, कोई conviction नहीं है. अगर बड़े moves हो रहे हैं तो कुछ छोटे orders से बड़े moves हो रहे हैं, या फिर कंटिन्यूस बाइंग या कंटिन्यूस सेलिंग से वो मूव आ रहा है. ये है प्राइस एक्शन. इट्स अ वेरी लेस अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट एंड बिकॉज इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. इस पे पूरा प्रेजेंटेशन इसी पे हो सकता है, बट
The basic concept is you must try to understand what is happening behind those bars. अगर एक बड़ा बार बन रहा है तो what are the chances के अगर मैं उसके let's say अगर कोई 15 मिनट का बार है, मैं उस टाइम फ्रेम का 1 मिनट चार्ट खोल के देखूं तो मार्कर Anyway, let's say that we have a large bar, you know. Now 15-minute bar, which is unusually large bar. अगर मैं उसके अंदर का छोटा time frame खोल के देखूं, what do you think we'll find there? A trading range or a trend? Trend, right? Similarly, most of the narrow range bars, right? Let's say a 15-minute or a 30-minute narrow range bar, and I want to see how that bar was formed. What will I find? A trading range. Right? This is the basic concept that we must understand as chart readers, which is very, very less understood. Every time you're looking at a chart, always try to think कि वो जो भी वो market environment है, वो कैसे बना है. We will not always guess right. Okay? It is possible to have a large range bar formed as a very, very volatile and very, very large trading range. Okay? वो हो सकता है, but more often than not, we will be right in saying that almost all the large bars in any time frame will have trends in lower time frames, right? And all the bars which are narrow range bars, अगर narrow range bars हैं और उसका जो close है वो center की तरफ है तो obviously conviction बढ़ जाता है ये कहने में. But even if the close is at one end and overall the bar is not very large, we can safely assume it's a trading range bar. Most of the bars will be trading range bars. Right? The expansion bars जो होते हैं ना, जो large bars होते हैं, ये expansion में अगर होते हैं. The market is in expansion phase within that time frame, right? And the contraction bars are very, very narrow range bars. ये basically जो सारे के सारे narrow range bars, छोटे bars जो you know एक end पे शुरू हो रहे हैं, दूसरे end पे close हो रहे हैं. बट इसके पिछला बार जो है ना वो इतना बड़ा है, right? तो ये भी फिर ट्रेडिंग रेंज बार ही है, ट्रेंडिंग बार नहीं है, इवन दो द ओपन इज हियर एंड द क्लोज इज हियर, राइट? नो, एक्सपेंशन लाइक आई सेड लिक्विडिटी ड्राई अप होने की वजह से होता है. एक साइड पे लिक्विडिटी जब ड्राई अप हो जाती है तो मार्केट एक्सपेंशन में चले जाता है, ब्रेकआउट में चले जाता है, राइट? मतलब बेसिकली क्या हो क्या रहा है वहाँ पे, एक रेंज में मार्केट था और इस रेंज में करते करते ब्रेकआउट हो गया. तो बेसिकली यहाँ पर भी बायर्स थे और इस ब्रेकआउट पे भी बायर्स हैं, राइट? तभी यहाँ से प्राइस क्लीनली ऊपर चले गए. अगर नहीं है तो क्यों जाएगा, राइट? जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं ना, we call them responsive buyers, that they're trying to buy the market when they perceive it as undervalued. Okay? Whoever is buying after here is an initiative buyer. He perceives that the market will go into a new valuation. Okay? And he wants to push the market to a new valuation. Our purpose mainly in trading should be to capture these moves. This is where the big money is going to come. Right? That most of the expansion bars, most of them, always नहीं कह सकते, but most of the expansion bars will probably come after very, very narrow range bars. Okay? And most of the trading range bars, rather opposite way में, after you see a big trend or a big move in any direction, the next period is very likely to be a contraction. Very, very likely. Right? So if we look at a daily chart and we buy a breakout, which is an expansion bar, तो डेली चार्ट में ऑलरेडी वहाँ पे एक्सपेंशन हो चुका है. नेक्स्ट टाइम फ्रेम में कॉन्ट्रैक्शन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, राइट? बट हम फिर भी क्लोजिंग पे जाके खरीद लेते हैं.
I'm sure at least some of you would be doing that. Yeah, I Or do it all the time. so next day क्या होता है? नीचे भी नहीं आता ज्यादा, आपके बाइंग से नीचे आ जाता होगा पर ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट ही करता है. 2-3 दिन बाद आप देखेंगे ना वो वापस ऊपर जा रहा होगा बट आपके बिना. I hope that wasn't rude or anything. मेरे साथ तो यही होता था हमेशा ही. बिना ब्रेकआउट पे जाके खरीद लेते थे, बेच लेते थे एंड अगले दिन में वो हमें तो स्टॉप आउट कर देता था बट उसके बाद वो जरूर चल पड़ता था ना. तो यू नो इफ यू आर बाइंग आफ्टर अ लार्ज एक्सपेंशन, आप सोच के चलो कि आप क्या कर रहे हो और आप रेडी रहो एक कॉन्ट्रैक्शन फेज के लिए. यू नो करने में कोई गड़बड़ नहीं है उसके अंदर, बट फिर आप मेंटली भी और आपका ट्रेडिंग प्लान भी उस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए. दैट्स इट. इट्स नॉट रॉन्ग टू डू दैट. ओके, एनीवे, सो initiative buyers want to push the market to new valuations. Responsive market participants are okay with where the market is right now, and they are happy to buy the market when they perceive it to be under or overvalue. ये perceptions हैं, ये real नहीं है. Right? But they believe that the value is somewhere here. So if the market goes here, they're ready to sell. The market goes here, they're ready to buy. Is the chart visible everywhere? Yeah. If we can perceive what kind of market participants are controlling the environment at that time, in that moment, तो हम बता सकते हैं कि जो रिजल्टिंग प्राइस मूवमेंट है वो कितना बड़ा होने वाला है. ओके, इफ द मार्केट इज बीइंग कंट्रोल्ड कंप्लीटली बाय इनिशिएटिव पार्टिसिपेंट्स, दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बायर्स और सेलर्स ना. वो बहुत कन्विक्शन से घुसते हैं एंड दे कम इन मास. बहुत सारे आते हैं एकदम से. वो इसलिए आते हैं बिकॉज जो भी इस रेंज के सेलर्स होते हैं ओवर वैल्यूड जोन में, वो बायर्स बन जाते हैं और उनको एग्जिट करना पड़ता है जब मार्केट ब्रेकआउट कर जाता है या वाइस वर्सा. तो उसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फोर्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा वेंजेंस के साथ मार्केट को अटैक करते हैं बाय और सेल साइड पे. मार्केट गिव्स रियली बिग मूव्स. राइट, वी जस्ट हैव टू परसीव एट एनी मोमेंट इन टाइम के. राइट, I'll restate. In an expansion, we want to follow the market. Right? In a contraction, we want to buy and sell at the edges. Preferably go with the trend within the contraction. In fact, preferably you should always go with the trend in the contraction. Because we always assume that it's an assumption that the next expansion will be in the direction of the trend. We will be wrong eventually. But जब तक गलत नहीं होंगे तब तक बहुत पैसा बन जाएगा. Can you repeat that? Sorry sir? जो अभी आपने समझाया है उसको बोला. Responsive market participants do not create large moves in the market, right? And the market is completely in their control in a contraction. So if the last expansion happened on the upside, we'll assume, as a basic assumption, we'll assume that the next expansion will also happen on the upside. So within the contraction, we want to buy when the market is undervalued. अगर हम कॉन्ट्रैक्शन में ही अंदर घुस गए तो हमें एक्सपेंशन का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा. Essentially, अगर contraction from trading range movement, ट्रेडिंग रेंज या फ्लैग support की तरफ आए, तो Yeah. खरीदना चाहिए क्योंकि simple. पिछला Yeah, expansion you explained much better. Buy at support in an uptrend and sell at resistance in a downtrend. Basically, that is what it implies to within a contraction. Right? But within the expansion आपको वो चांस नहीं मिलेगा. मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे पहुंचेगा ही नहीं. आप वेट करते रह जाएंगे और वो एक्सपेंशन करते हुए चला ही जाएगा. वो इंट्राडे पुल बैक भी नहीं देगा. राइट, so you need to just get in, इनिशिएटिव लो और घुस जाओ एंड जो होगा देखा जाएगा उसके बाद. राइट, इफ यू कैन, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू कैन गेज कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वट एवर टाइम पीरियड यू ट्रेडिंग, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन से
पार्टिसिपेंट्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, इनिशिएटिव पार्टिसिपेंट्स या रिस्पॉन्सिव पार्टिसिपेंट्स। तो हम अपनी स्ट्रैटेजी उनके साथ मैच कर सकते हैं और